रहे हैं. Hello guys, Crickbox is back, and today we are doing the preview for the Giants game. The real giants of this tournament, India versus South Africa, the number one and number two teams. So, let's start. I know India and South Africa both of them like have like super batting lineup, but Tushar, who will you pick? Um, yeah. uh, I'm neutral because I'm now in New Zealand. So for me, I'll still pick India. And it's going to be a fair contest. So Yeah. I think my vote is not based on emotions or anything. But I think if India wins the toss and we bat, the contest just goes 80-20. From 50-50 to it goes to 80-20. Mm. However, having said that, I am a little bit scared from South Africa. They have their best game. I don't think I've seen them play how they're going at the moment. Their bowling's working, their batting's working. Uh, Quinton de Kock is a whole team altogether in himself. Yeah. Yeah. So I think it'll be a great game. So many individual contests to look up to. Um, so that's why. However, in purely in terms of skills and the form, I think we have a slighter advantage over South Yeah. Africa that we are good in batting first and batting second. So, True. basis on that, my pick is India. Yeah. How about you, Abhishek? Yeah. India, obviously, because of it's my birth country. First thing first, right? Yeah. वहाँ पे pure emotion है. So India is an emotion for me. But anyway, logically speaking as well, मुझे ऐसा लगता है India का bowling lineup is far, more all round than any other side. Spin department में भी, pace department में भी, and batting wise, I think दोनों की prowess is equal. South Yeah. Africa की मुझे ऐसा लगता है power hitting ज़्यादा बढ़िया है. But again, that's going to be up against the best bowling attack of this World Cup so far. So I think India will have an advantage, and it's not the flattest of the wickets that from what we've seen. So and I know South Africa to be bad chasers even on flattest of the wickets. So I think India has an advantage. Obviously, 49-51, 51 in favor of India if India bat second, but if India bat first, as Tushar said, it's going to be 80-20. Yeah, my pick is also not like a biased one, but I also feel India because the thing is India ने यार इस टूर्नामेंट में बहुत ups and downs देख लिए हैं. Sure. ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में भी like we were 2 for 3 and Yeah. then we came back, right? इंग्लैंड वाले गेम में भी like we didn't score much but we did well. साउथ Yeah. अफ्रीका का क्या है other than the वो नीदरलैंड्स वाला गेम they are just like going flat, like everything Yeah. is going on there, and now they're gonna face like the best bowling attack of the tournament. That is So और मेरे को लाइक आई होप यार ऑब्वियसली इंडिया में भी बहुत सारे इंडियन टीम में भी मैनेजमेंट में भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं यार उनका एक सिंपल गेम प्लान है साउथ अफ्रीका का और वो हमें क्रैक करना है हमें पहले 3 विकेट लेने हैं उनके पहले 20 ओवर में yeah. एंड देन द गेम विल बी लाइक 90-10 बिकॉज Right. वो 6 बैट्समैन लेके खेलते हैं 7वें पे उनका ऑलराउंडर आता है यानसन सो उनकी टोटल स्ट्रेटेजी ये है चाहे रन रेट हो या ना हो दे वांट कि 30-35 ओवर्स तक क्विंटन डिकॉक टेम्बा बवूमा और वैंडर डूसन इन तीनों में से ये कोई बैटिंग करते रहे एंड देन दे अनलीश मिलर मार्करम एंड क्लासन इन लास्ट Hmm. 15-20 ओवर्स सो अगर इंडिया Right. ने इंडिया की जैसी बॉलिंग चल रही है आई थिंक अगर वो स्टार्टिंग में हमने 3 विकेटें ले ली ना तो फिर गेम जल्दी हो जाएगा डन Yeah. बट अगर साउथ अफ्रीका और मैं चाहता हूं कि हम साउथ अफ्रीका को उसकी स्ट्रेंथ पे ही चैलेंज करें True. वी शुड लेट देम बैट फर्स्ट राइट Right. और फिर इनके Yeah. विकेटें हमने जल्दी गिराने हैं क्योंकि किसी टीम ने गिरा ही नहीं है हम गिराएंगे इनके विकेट जल्दी और फिर देन वी कैन Right. इजीली चेज इट डाउन Hmm. बिकॉज ईडन गार्डन्स में सेकंड इनिंग में द विकेट गेट्स Easier बेटर होता अभी थोड़ा तक जो सा. 2 Yeah. गेम हुए हैं दोनों गेम में बैटिंग वाज बेटर इन सेकंड इनिंग्स तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी प्लस एंड मोर ओवर इट इंडिया हैज दिस कैपेबिलिटी ऑफ प्लेइंग our best spinners best pacers too South Africa का still like there's a doubt with best spinners because they Yeah. haven't faced like these kind of spinners like Kuldeep Yadav and Ravindra Yeah. Jadeja True. so Yeah. I feel that so but the other question is like what do you think like we should do like if suppose Rohit Sharma wins the toss Hmm. what do you feel Tushar we should do like he should pick batting bowling Um, I want India to chase. As you said, that we should pick them on their strength. So I think we should expose South Africa,
middle order is what I want to see. Let's say if a Miller or a Markram comes in at the in between 15th and the 25th over, I want to see how Yeah, they perform. And Kuldeep Yadav for us is an X factor. Yeah. Period. I yeah, don't think South Africa has the. I mean, I could be underestimating them, but I mean, who knows? But I think Kuldeep Yadav in Eden Gardens, again, a little too pacey spinning track, he can be lethal. Yeah. Especially with his recent transformation, I should say. He's worked on himself really, really well. yeah, He's gotten his speed has gone up. He has more variations now, Yeah. and he bowls according to the plan. I For a Chinaman wrist spinner, leg spinner, you look at the spinners around the world, and you expect them to bowl, one bad ball in an over. Yeah. yeah, But Kuldeep Yadav doesn't. He's got his Yeah. game plan set. He knows what he's doing. So yeah, for these reasons, I want India to chase, and some way or the other, I want to see how good are we against a good South Africa team. So let's say Sure. if they do make 350, even if they do make 350, I want to see us winning by scoring 350. Um, yeah, Take it down to the wire if it has to, but yeah, let's see how good our batting is. I want to see Shreyas Iyer taking pressure Yeah. yeah, and see how he performs then, and how he goes. Because obviously we have the chase master. yeah, Kohli is going to be there for whatever you expect from him. You know that he's going to be there. Even if he scores 50, that 50 runs will have an impact. Yeah. But I want to see how Shreyas Iyer go. yeah. Yeah, Mm. What about you, Abhishek? Who do you Agreed. Yeah, want? I think chasing just for the matter of fact there is still 1% possibility, which we'll know obviously in a few hours' time. We will be playing our semi in Eden Gardens, right? Yeah, So, right, if there is a mm, 1% of chance of that, I think we should be chasing because it's in all likelihood if we are playing in Eden Gardens, it's going to be against Pakistan. And in a pressure right, game, chasing against a decent bowling lineup, I know it's a different ball game semi-final altogether. So I'd yeah, prefer them chasing, and as Tushar rightly called out, right? I think we've had our batting failures while chasing as well as while batting first, so we're past right, that, and we have that set template. But in a pressure situation where the target is like 300 plus, let's see how the team fares. And I'm yeah. hopeful that even if things go south, hopefully we'll be able to crack that particular pressure and have a dress rehearsal of the final or the semi final. yeah. Like Yeah, मैं तो बस यही ऐड करना चाहूंगा. Like एज एन इंडियन फैन, अब हम भी थोड़े यार पाकिस्तान वाले टोटके लगाए ना. Yeah, बेसिकली इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर अस. अगर exactly. हम हाँ. जीते अगर हम जीते तो वही वाली बात है, बेस्ट टीम को हराएंगे हम, सेकंड बेस्ट टीम को. ठीक है, और अगर हार correct, गए तो हम कहेंगे 2011 में भी हम बस साउथ अफ्रीका से हारे थे, फिर भी वर्ल्ड कप जीते थे. वी विल से द सेम correct, थिंग, दिस इज 2011. तो True. correct. but at least यार we should beat them on their strength, तो then they will be shattered. अगर हमारा साउथ अफ्रीका से गेम हो सेमीफाइनल में, तो they will know कि इंडिया चेस भी कर लेगा हमें और रोक भी लेगा हमें. So Yeah. I think it will be a better Correct. thing. So Tushar, your batsman to watch out for from India. Virat Kohli. Okay, Virat Kohli. and South Africa. Uh, my I don't want to pick QDK because he's just way too obvious. Yeah, I'm going to go with David Miller. Actually, his record is good against India. yeah, Yeah, you're right. Yeah. So what about you, Abhishek? Yeah, I think the star guys are running a show on Virat Kohli, so I'm gonna pick Rohit Sharma. They fucking jinx it. Yeah, And yeah, and with the for South Africa, I'm gonna go with Aiden Markram. He plays quite well, so Aiden Markram. Okay. yeah, My pick, obviously, for India, it will be um, Virat Kohli, because I want India to chase, so I want the yeah. chase master. And for South Africa, I still feel like QDK will be very important in Eden Gardens. And Mm. like, what about the bowler, Tushar? Bowler to watch out for? um, I mean, from India, it's going to be Kuldeep Yadav. I know we have great pace bowling attack at the moment, and it's working well for us. But I want to see how South Africa face Kuldeep. I don't think they've seen anything like him. And from South Africa? Uh, uh, I want him to get probably like um
have 80 runs in 10 overs. But Rabada for me, I know. because he's ruthless, Yeah, and Yeah, he chirps, he talks, he comes in your face. yeah, So yeah, I want to see how Lokesh Rahul, how Rohit Sharma, these two right-handers, how they handle him, because he swings the ball and he swings it yeah, good. So yeah. yeah. What about you, Abhishek? Best like bowler South Africa के लिए तो definitely KG Rabada. I know Mm, he has a good record against India as well, and against Kohli mm, too. He has a very good yeah, record. against Yeah, exactly against Kohli too. yeah. And for India, I know all five are good, right? So I'm gonna go with Jadeja. Jadeja. Yeah, My pick will be Jasprit Bumrah yeah, because I know, because I told you guys, like, I want 3 wickets in like first yeah, 10 or 15 overs. So I know yeah, they're ah, for gonna sure. come after 15. so it So has to be, yeah, Jasprit Maybe, yeah, Bumrah or like Mohammad Shami, like it's very hard to pick between those two, man. They are going yeah, amazing. it's actually very hard to bro. pick I between all five of them. Yeah, exactly. exactly, और मुझे लगता है बुमराह is actually the reason why wicket falls to other bowlers. Obviously, You are for sure, absolutely right. definitely, वो Absolutely बंदा right. जो, yeah, I mean, just the mindset of the batters to go after a different bowler because they can't go after exactly, Bumrah, Bumrah, yeah. exactly. changes, yeah. और वो मतलब हम अब बचपन से हम लोग खेल रहे हैं और देख रहे हैं, तो हमें इतना समझ में आ जाता है ना ये चीज कि यार हाँ, हाँ, बुमराह इज दैट साइलेंट, yeah, the वो unsung hero साइलेंट who's साइलेंट behind. असासिन है यार वो exactly, बंदा। yeah. और इसीलिए खतरनाक, या मेरा मेरा बॉलर साउथ अफ्रीका की जो पिक है ना, वो लुंगी एनगीडी है। he True. he is that sort of a person, लाइन एंड लेंथ, line and length। और the other thing is, सबको ये पता होता है रबाड़ा ने आना है, रबाड़ा ने आना है, इनके ऊपर से रन निकालो, उस या चक्कर में उस पे आउट हो राइट, जाते हैं। Yeah, राइट, true, कि that true. guy राइट, has दैट्स हाउ ही variation। गेट्स विकेट. या बिकॉज अभी तक का जो एनालिसिस है, एनालिसिस में ये वो लोग ये कह रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स हैं, दे आर like bowling well every game because of their height and structure। एंड True. जो भी तीनों जो उनके पेसर है ना, उनका वो जो एक्शन है वो अप है, Yeah, high ऊपर से arm बॉल action. हाई आर्म Yeah. एक्शन है, ऊपर से आया रिलीज मैं. करते हैं बॉल। तो हम्म, साउथ अफ्रीका को तो वो ये रीजन दे रहे हैं। और जो इंडिया है, ऑब्वियसली इंडिया इज टैलेंट एंड स्किल एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? तो आई थिंक यार इट इज अ वेरी फेयर बैटल। बट मुझे बैटिंग में ना इंडिया का एज इसीलिए लगता है क्योंकि साउथ अफ्रीका बैटिंग ऑर्डर, इट फिनिशेस एट नंबर 6। True. मार्को यानसन वोंट बी एबल टू हिट लाइक इंडियन बॉलर्स लाइक फॉर फन, जैसे वो इंग्लैंड को मार रहा था और यहाँ वो मार रहा था। तो इनके पास 6 बैट्समैन करेक्ट, है, हमारे पास प्रॉपर 7 बैट्समैन है। तो मेरे को बैटिंग में कहीं एज राइट. लगता है। और प्लस हमारे पास कंडीशंस के बैट्समैन है, लाइक Mhm. स्पिन विकेट अच्छा। अगर यार गलती से अब 35 ओवर्स में इंडिया को स्टार्ट मिल गया, तो फिर सूर्या क्या कर सकता है वो हम सबको पता है। True. उसने एंड करेक्ट. And एंड मोर especially Eden Gardens. या एंड मोर Yeah, ओवर इट, वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट रोहित शर्मा हैज स्पेशल लव फॉर ईडन गार्डन्स। for sure. And in यस, and November यस. too. November May he has like two double hundred, one T20 टू hundred डबल and हंड्रेड. whatnot. Yeah, ओके, तो यार yeah. ये आई गेस लाइक मेरे को लग रहा है वर्ल्ड कप का सबसे बेस्ट गेम होगा। लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि ये बेस्ट हो, मैं चाहता हूँ हम लिटा दें साउथ अफ्रीका को अच्छे से, ठीक है? I या feel the same. Yeah. बिकॉज तुषार, हमने जब डिस्कशन किया था ना पहले इसके बारे में, वर्ल्ड कप कैसा होना चाहिए, तो मैं अभिषेक मोस्टली हम सारे सेम पेज पे थे। मैंने कहा भाई हमें कोई क्लोज गेम नहीं चाहिए। हम हाँ, चाहते हैं हम हाँ. 2007 की ऑस्ट्रेलियन टीम हो, आए, जीते और घर जाएं, बस और कुछ नहीं करना हमें। राइट, राइट, राइट. फिर धीरे धीरे फिर ये भी आ जाएगा कि आईसीसी और बीसीसीआई ने स्पेशल बैट्स भी दिए इंडिया वालों को, उनसे रन बन रहे हैं। और हाँ, यार एक चीज, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, बड़ा फनी सा टॉपिक है यार। उसने वो अफगानिस्तान ने वो मैच जीता था पाकिस्तान से, तो उसने वो बाबर आजम से बैट लिया था, रहमानुल्लाह गुरबाज से। जब से उसने बैट लिया 2 मैच से उससे रन नहीं बन रहे। कहीं ऐसा तो नहीं गुरबाज को अपना बैट बाबर आजम को देना चाहिए था। For sure. It's um, fun. अभी तीन तीन दिन पहले मैं ऑफिस से एक मीटिंग में जा रहा था, क्लाइंट मीटिंग में, तो लकीली मेरे को अफगानी ऊबर ड्राइवर मिला. हाँ, और उसने, अब ऑब्वियसली एक दूसरे से हिंदी में बात करना शुरू कर देते हैं, तो उसने मुझे सबसे पहली चीज यही बोली कि भाई हाँ, एक हफ्ता हो गया आज. उस हाँ। दिन एक हफ्ता हो गया था, तो कहता अभी तक खुशियां मना रहे हैं हम वहाँ. इसलिए कि हमने पाकिस्तान करा है. वो यार वो ओह पॉलिटिकल चल रहा है मैन. ना उनका, पॉलिटिकल। uh, एक्चुअली उनके 2 लाख हाँ, बंदे पॉलिटिकल वापस चल भेज रहा है. दिए हैं। yeah. तो और एग्जैक्टली. यार वो इंडिया से तो वैसे ही बहुत डियर है, राइट? लाइक एक तो आईपीएल में उनके प्लेयर्स हाँ, को इतना वो मिलता है, राइट. और फिर हमने ग्राउंड ऊपर भी से दिया इरफान हुआ है। पठान नाच रहा है. हाँ, Uh-huh. हमने ग्राउंड भी दिया हुआ है।
वो तो ऐसा लग रहा है इरफान पठान पाकिस्तानियों को और जला रहा है, रबिंग शॉट ऑन ले ले ये ले। नहीं, न्यूज चैनल्स पे कहा है भाई, न्यूज चैनल्स में उसने कहा है, आमिर ने, या कि 2025 में जब चैंपियंस ट्रॉफी है, मैं चाहता हूँ इंडिया यहाँ पर आए और पाकिस्तान उन्हें हराए, फिर मैं भी इरफान पठान की तरह नाचूंगा। मैंने नहीं, कहा अच्छा। उसने ये 2025 के लिए नहीं, उसने ये बोला है कि अगर गलती से सेमीफाइनल में पाकिस्तान आ गया नहीं और नहीं नहीं इंडिया नहीं को, नहीं नहीं उसके नहीं लिए भी नहीं। बोला उसने। अरे यार उतनी औकात नहीं है। नहीं नहीं, वो उसका स्टेटमेंट यही था उसका एक्चुअली। नहीं, उसने ये बोला था कि यहाँ आए तो अच्छा हो सकता है, फिर शायद सेमीफाइनल में, सेमी मैंने सेमी सेमी के लिए मैंने बोला शायद फिर उसने। क्लिप देखा होगा ना 30 सेकेंड्स वाला, हाँ, तो उसमें वो कट 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 कर दिया होगा। उसने सेमी सेमी के लिए बोला है कि गलती से हम पहुंच गए और हमें इंडिया नहीं मिलना है वहां पे। तो हाँ अगर हमने हरा दिया उनको, तो फिर मैं इरफान पठान से अच्छा नाच के दिखाऊंगा, ये बोला। अच्छा। और ये नहीं बोला कि अगर इंडिया ने हरा दिया तो। तो उसके बाद तो टीवी तोड़ देंगे साले। बट वही है यार, लेकिन लाइक अब पता है कोई टीम वही वाली चीज है। इवन जैसे जो इनके और अच्छे वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, शोएब मलिक वगैरह, वो यही बात करते हैं हमेशा कि यार कोई टीम अगर अच्छा खेल रही है तो उसको भाई अप्रिशिएट करो और उससे सीखने की कोशिश करो। कहता है लेकिन हम्म हमारे यहाँ ये हम्म प्रॉब्लम है, हम क्रिटिसाइज करना पहला चाहते हैं, बहाना ढूंढ लें, एक्सक्यूज ढूंढ लें, कैसे क्या करना है। अब भाई इंडिया खेल अच्छा रही है यार, उन्होंने अब आज से हम्म 6-8 महीने पहले हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कर क्या रहे हैं, कभी सूर्या खिला रहे हैं, कभी नहीं खिला रहे हैं। तो हाँ, टीम अब फॉर्मेशन नहीं था कुछ। हाँ, अब समझ में आ रहा है ना कि उन्होंने सबको इतने मैचेस दे दिए हैं कि बेंच से कोई भी बंदा उठ के आ रहा है, वो रन मार रहा है। ट्रू। करेक्ट यार करेक्ट। हमने ये रियलाइज नहीं करा कि सोचो हमने बेंच पे अश्विन को बिठा रखा है भाई। हाँ, अश्विन सीरियसली। हाँ, किस टैलेंट का प्लेयर है और यार। मतलब और ईडन गार्डन्स में भी शायद वो ना खेले, जहां हाँ वो समझ में नहीं आएगा किसी को। एग्जैक्टली exactly. करेक्ट। अश्विन को बिठा रखा है, ईशान किशन इज बीन लाइक या रेवलेशन या राइट, लाइक या उसने या 200 मारी हुई एग्जैक्टली। है, 50 से उसकी ऊपर की एवरेज राइट है। तो यार राइट। वही वाली चीज है। और मजे की बात, ऐसे प्लेयर हमने स्क्वाड में बैठाए हुए हैं और उसके बाद भी कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा कि क्यों बैठाया हुआ है। एग्जैक्टली। या नहीं तो होता है ना, कुछ लोग होते हैं वो मीडिया वाले, इनको क्यों नहीं खिला रहे, इनको क्यों नहीं खिला रहे, बिकॉज भाई कोई क्वेश्चन है ही नहीं। जिस बंदे पे क्वेश्चन होता एग्जैक्टली। है अगले मैच में उठ के वही रन बनाता है। अब श्रेयस अय्यर पे लोग बोलने हम्म लगे थे, अय्यर आया पिछले गेम में, उसने आए थे छक्के मारे। भाई 6 हिटर तो भाई अय्यर से आई थिंक बढ़िया कोई नहीं है। लॉन्गेस्ट सिक्स हाँ लॉन्गेस्ट 100। सिक्स। हो गया टूर्नामेंट का, आई गेस 106 मीटर्स और समथिंग। हाँ, 106 हाँ है। भाई वो, वाओ मैन। नहीं ये तो मैंने मान क्लीन लिया, सिक्स मारता है, और हिटर। ऊपर से जो वो सर नीचे रख के मारता है ना, हाँ हाँ हाँ। सीरियसली यार, उसका उसका नेक्स्ट लेवल है स्पिनर पे हिटिंग। जो नो लुक, वो बहुत नेक्स्ट बस लेवल है यार। यार कनेक्ट उसका बहुत ये जबरदस्त करता है। उसकी बस हर इंडियन फैन को तो ना यही प्रॉब्लम है, जो क्रिकेट समझता है जैसे हम लोग, जैसे जो हम बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, यार वो ना कभी बंदा कन्विंसिंग नहीं लगता, वो 100 भी यही मार बात लेता है, कन्विंसिंग नहीं लगता, हार्ट अटैक ही रहेगा। हमारे दिल में हार्ट अटैक ही हम्म रहेगा फिर भी, कि बंदा पता नहीं अब उठ के क्या कर दे। ट्रू। हाँ, और मतलब जो मेरा पॉइंट था कि इंडिया अगर चेस करे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और लेट्स से कि इंडिया इज इन दैट पोजीशन जहां पे 15 ओवर में हमने 100 बना लिए, बट दो सेट बैट्समैन एक साथ चले गए, हाँ रोहित शर्मा और शुभमन गिल, तब तुम श्रेयस अय्यर को तुम चाहोगे कि वो खड़ा रहे, बट उस तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हाँ। एग्जैक्टली, तुम्हें यही लगेगा प्रॉब्लम है। यार कि अब चले जाएगा, अब चले जाएगा, अब अब चले चले, जाएगा, तो म- इसीलिए यार। मतलब यार अब कई बार ऐसा लगता है कि अब जैसे पिछली बार जब वो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया, तो ऐसा भी लग रहा है कई, अब कई एनालिस्ट, यार वो तो पता है इंडिया में तो रन बनाते हैं, व्यूज चेंज हो जाते हैं, लेकिन कई एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि भाई हम लोग बेशक क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन उसका रोल ही ये दिया हुआ है कि तूने जाना है और तूने मारना है, तूने ये नहीं करना कि। पॉसिबली बट ओडीआई में पॉसिबली। मतलब मुझे समझ में नहीं आता भाई, हम कोई बेसबॉल थोड़ी खेल रहे हैं। नहीं यार, पता है क्या वो हाँ मुझे, हाँ, उसका रोल दिया हो ना दिया हो, उसको ये बैकिंग दी हुई है कि तू जिस जिस तरह से तुझे समझ आता है तू खेल, और हाँ खेल। नेचुरल गेम खेल। हाँ, या नेचुरल गेम खेल। एंड आई थिंक राइट। डिफेंसिव गेम उसका नेचुरल है ही नहीं। और अगर हम नहीं उसके है नहीं है। डिसमिसल्स भी देखें तो उसने हम्म ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी प्रेशर रिलीव करने के लिए अपने आप को मारने की कोशिश की थी। सेम हम्म अगेंस्ट इंग्लैंड भी उसने वही किया कि प्रेशर आ रहा था, हम्म तो द ओनली वे ही अंडरस्टूड वाज टू हिट द बॉल। हिट द राइट। बॉल या। वो तो आई थिंक वो क्लिक होता है, कभी कभी नहीं होता। एंड ऑब्वियसली जब प्रेशर में होते तो आप टाइम भी नहीं कर रहे हो, तो उतना अच्छा कई बार नहीं आता। तो probably वही है। हम्म And he didn't feel the pressure against Sri Lanka, or he must have been feeling what, that day he clicked and it हम्म। just दैट डे looked so good. Yeah. मेरे ख्याल से इस या एग्जैक्टली, एंड बेसिस ऑन दैट मेरे ख्याल से उसके आसपास प्रेशर एब्जॉर्ब करने वाले लेजेंडरी प्लेयर्स हैं। हाँ, लाइक true. कोहली उससे एक डाउन ऊपर आ रहा है, केएल राहुल उसके एक डाउन नीचे आ रहा है, तो एंड इसीलिए दीस वो गाइस आर फीलिंग नोन टू देता है। एब्जॉर्ब प्रेशर। तो Yeah. मे बी, हाँ मे बी उसके पास वो है। और वही हम बाहर से बैठ के बोल सकते हैं, एंड देन यू नेवर नो कि भाई इनसाइड वो व्हाट इज हैपनिंग True. इनसाइड। सो
So yeah, maybe that is a team collective decision by the team. Yeah. या तो आई थिंक हमारे सारे बेसिस कवर्ड हैं. वर्ल्ड कप हमारा है गाइस एज यूजुअल. Yeah. हमारी अभी भी वही से है. तो वी आर साइनिंग ऑफ. लेट्स do a post match after India versus South Africa. That will be exciting too. For Please sure. like, share, and subscribe. Crickbucks will be back. Thank you.